एंड मेरा भी ड्रीम यही था कि एटलीस्ट मेरे जो स्टार्ट के 5 ईयर्स थे, तो उन 5 सालों में मैं एटलीस्ट 2 कोई तो टेक्नोलॉजी सीख जाऊँ। सो आई एम जस्ट गिविंग यू लाइक आइडिया कि हमारा जो ये स्टार्टअप है ये बंद हो सकता है। आई वाज एबल टू गेट एटलीस्ट 7-8 ऑफर्स ड्यूरिंग दैट टाइम, and I decided to go for Infosys after 1.5 years. After 1 year, I was not getting any hike from there, and that was the reason behind it to switch again hands-on experience on it. But you should be able to say at least the theoretical concepts of it. So हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हमारे साथ है गौरव अधव, who has total 3+ years of experience as a Java developer and he's currently working with the EPAM system company. So basically गौरव और मैं दोनों ही same company में थे, that was the Infosys, and we both were in the same project. Recently as you all know कि मैंने jump किया है to the another company that is the EPAM system, and luckily गौरव की भी same company में selection होगी, that is the EPAM system. So we both are in EPAM right now. So basically गौरव से इस वीडियो में जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, बिकॉज उन्होंने भी इसी रिसेशन के टाइम पे स्विच लिया एंड ही गॉट मेनी ऑफर्स एज वेल। सो जानेंगे इस वीडियो में उनकी पूरी जर्नी के बारे में। सो ओवर टू यू गौरव, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? जी मैं बढ़िया, एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन यूट्यूब चैनल। यस, थैंक यू सो मच गौरव। बेसिकली अब हम स्टार्ट करेंगे आपके एक ब्रीफ इंट्रो से, मतलब मैंने स्मॉल इंट्रो तुम्हारा दे दिया है, बट आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, लाइक तुम्हारी स्कूलिंग कहाँ से हुई, तुम्हारा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था एंड हाउ डिड यू एंड अप डूइंग इंजीनियरिंग। सो अपना एक ओवरऑल जर्नी तुम्हारी कैसी रही उसके बारे में थोड़ा बताओ। सो आई बिलोंग्स फ्रॉम धुले महाराष्ट्र, and I have completed my complete qualification from my hometown only. So I have completed SSC in 2014 from SPSM English Model School, and after that I was decided to go for science, but due to some reason I was not able to get the admission. Then after closing those science, arts and commerce admission, after that this diploma or polytechnic admission gets open. So I tried in the engineering college for the diploma or polytechnic. Okay, so as we know, like when we try for get the admission into the engineering, we have to select our stream. So similarly in diploma also the same process, we have to follow this, we have to select the stream where during the 2014 the most hope for was for the civil and mechanical, and I was not having any such dream to get into some specific field. So I also went for the same thing. I put my number for civil, then mechanical, then for computer, and then for electronic. But due to some like high merit list for civil and mechanical, I was not able to get into that. So I got admission into the computer engineering, and I continue doing my diploma in the computer stream. Again, after 1 year, I tried to go for again civil or mechanical, as the criteria was like that ki if you get more than 70%, then you can try, and you can go to you are open to select any other branch. Okay, if there is any opening, then definitely you will get into that. तो हालांकि द फॉर्मेलिटीज वाज लाइक टू जस्ट गेट साइन फ्रॉम द चेयरमैन ऑन अ फॉर्म, एंड मुझे वो जस्ट सबमिट करना था मेरे कॉलेज में टू द प्रिंसिपल, एंड इट वाज सिंपल फॉर्मेलिटीज. बट अगेन व्हेन आई वाज वेंट टू दैट चेयरमैन, देयर वी मेट विथ माय फादर फ्रेंड्स who suggested me to be in the same stream, as his daughter was also working in the same she also did the computer engineering, and she is now earning a good salary. So as you get it luckily, so trust on God and continue your qualification in the same stream. So again we decided to like continue the qualification into same. Then I I completed my diploma in 2017, and again like in 2017 I have to go for engineering, and I was the second rank holder in diploma. So there were like a lot of good colleges I was thinking to go for, but again due to some financial reason, I don't wanted to spend like my parents whole savings on me, as I was thinking like, see, I have done the diploma from North Maharashtra University, like it was the MSBT, so it was Maharashtra University.
But again, I was decided like it is better like to stay here, as if I go outside, then the university change and the pattern will also change. And if I will not able to like give my best there, then there are like lot of chances to like spend money, but did not get like to not get the opportunity into the companies. So what I was thinking like to stay in the hometown and to complete the next qualification. So after diploma, we directly get admission into the second year of bachelor of engineering. So in hometown only, I was having some good colleges. In one of that, it was the Gangame College where I got the admission, and I completed my Bachelor of Engineering from that. So I was the pass out of 2020 batch, and there I was the first rank holder. सो गौरव, जैसे कि तुमने बताया कि तुमने डिप्लोमा किया है, वैसे ही मुझे एक स्टूडेंट का डीएम आ रखा था जो कि उन्होंने शेयर किया हुआ था कि उन्होंने डिप्लोमा किया है, बट जैसे कि अभी जो ट्रेंड है कि सारे बीटेक इंजीनियर्स जो होते हैं उनको ही जनरली कंपनीज जो है वो हायर करती है, तो उन्होंने डिप्लोमा कर रखा है और डिप्लोमा के बाद ही हैज़ डिसाइडेड कि वो अब इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वो ऑप्ट करेंगे. लाइक डिप्लोमा के बाद ही इज़ डिसाइडिंग कि जॉब मार्केट में, बिकॉज ऑब्वियसली जो कंपनीज है वो ज़्यादा इंजीनियर्स को हायर करती है. तो इस पर तुम्हारा क्या टेक है? लाइक क्या डिप्लोमा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इंजीनियरिंग करनी चाहिए, डिप्लोमा के बाद कोई जॉब के ऑप्शंस वगैरह रहते हैं? See, job options after diploma is there, but you will not get a very good salary after if you do the diploma, and if you try for some companies, they will not offer you as good as the engineer as to the engineers. Okay, because अगर आप एज ए डिप्लोमा जाते हो तो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम होती है अगर आप सिर्फ डिप्लोमा के बेस पे जाते हो, बिकॉज लाइक इट्स जस्ट काइंड ऑफ यू आर डूइंग 10+12 and then you are going into the market and looking for job. So there will be difference between this 12th candidate and the graduate candidate. Okay, so similarly there is a difference for diploma and the degree person. So if you do the diploma, then I will say that go for the degree and do the, because see यहाँ आपको एक एडवांटेज ये मिलता है कि आपने डिप्लोमा में ऑलरेडी सब कुछ कॉन्सेप्ट जो सब कुछ जो इंजीनियरिंग में हमें सिखाए जाने वाले टॉपिक सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, जैसे कि C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, माइक्रो सर्विसेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, हार्डवेयर, और ये सारे जावा जो HTML होता है वो, तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स है ये ऑलरेडी आप सीख चुके हो. इन इंजीनियरिंग में तो ये कहूँगा कि बस ये जो सब्जेक्ट्स है इनमें कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं एंड इट्स काइंड ऑफ रिविजन फॉर यू. तो इट्स नॉट लाइक डिफिकल्ट, बट आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट हियर इफ़ यू हैव डन द डिप्लोमा देन गो फॉर डिग्री. यहाँ पे एक और एडवांटेज ये है कि जैसे अगर आप 10+12 करते हो एंड देन इफ़ यू गो फॉर BE देन यू हैव टू कंप्लीट 4 years. बट इफ़ यू डू द डिप्लोमा एंड देन यू go for the degree, then you have to just do the degree for 3 years as you directly get the admission into the second year. So second, third and final year, just 3 years you have to do. ग्रेट गौरव. सो बेसिकली जैसे आपने बताया कि कॉलेज के टाइम पे जैसे कि हर एक स्टूडेंट फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, तो आपने भी वो फाइनेंशियल स्ट्रगल फेस की है, बट इट्स बीइंग वेरी गुड, योर जर्नी इज़ बीइंग वेरी इंस्पायरिंग. राइट नाउ यू आर अर्निंग वेल एंड फाइनली जो होता है ना एक हर एक स्टूडेंट का ड्रीम कि मैं एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा एंड आई वुड हैव बीन अर्निंग वेल, सो दैट्स बीन वेरी इंस्पायरिंग. सो आई वांटेड टू नो फ्रॉम योर एंड, लाइक इट्स बीन 3+ years ऑफ एक्सपीरियंस, यू आर वर्किंग एज अ जावा डेवलपर. सो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? सो लाइक आपने जावा लैंग्वेज कैसे सीखी एंड हाउ डिड यू डिसाइडेड कि आपको जावा में अपना करियर जो है वो परस्यू करना है एंड यू विल एंड अप बिकमिंग अ जावा डेवलपर? सो अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए. सो जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, आई वाज इन द थर्ड ईयर ऑफ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग. एट दैट टाइम आई डिसाइडेड दैट कि एटलीस्ट मुझे एक टेक्नोलॉजी में परफेक्ट होना है. सो बिफोर दैट आई डिड मल्टीपल कोर्सेज, बट आफ्टर कोर्स व्हाट हैपन इज लाइक अगर हम 2-3 मंथ का गैप दे देते हैं सो वी फॉरगेट लाइक हम भूल जाते हैं जो भी हमने कुछ सीखा है, एज we not continue to practice the same, right? So I decided instead of doing now course, I will do the some internship. So in my hometown only we have one WK Texas company which is private limited. So I decided to go there. I applied there, and luckily I got the opportunity. So there were like multiple technologies available, like front end, back end, or the Android applications. So I decided to go for Android application development.
and I did 1 year internship, and during that I was able to learn the complete Java, and I was able to, like, after 1 year I was able to build a complete application without anyone's help. So that was during my college years. I did 1 year internship from which I learned the Java language. And again, after suddenly in last year, I got the placement in two companies. One was the MNC from Mumbai, and one was from the Pune location, which was small scale company. Okay. So, but both the companies was having some kind of bonds for 1 or 2 years. So I decided to not go for that. And luckily, 2020 May, in the month of February, we get to know like the COVID is coming to the India, and we know from March 2020 lockdown was started. So luckily on 9 March, I got a call from LinkedIn, which was the person was asking me like, we have the opening for Android application developer, and we are providing the remote opportunity. So are you interested? So I said yes. And on 15 March 2020, I started working for them. It was the small company, small startup, you can say, and they were trying to develop a product like Instagram or Facebook. So there I worked complete year, and as it was the startup, they were trying to get investment. But जो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उनका मोटिव ये होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट अगर कुछ रेवेन्यू जनरेट करता है तो ही हम चाहेंगे कि उसमें इन्वेस्ट करें. एंड आवर प्रोडक्ट वाज नॉट जनरेटिंग कोई मनी. ओके. So after 10 months, the owner or the CEO comes to us. He scheduled a meeting and he said as we are not going to get any investment in upcoming months, so you better to go in the market and try looking for some jobs. We can survive from now to 2-3 months more. So I am just giving you idea कि हमारा जो स्टार्टअप है ये बंद हो सकता है. So again, I tried, started looking for a job, and due to the COVID, the exam was get extended. So instead of March, April in 2020, it was pushed to November in 2020. So again, I was a fresher. So again, there were campuses coming virtually in 2021. So I was fresher. I applied in Capgemini, and I remember the date on 25th March 2021. I got selected into the Capgemini, and on 30 March, I joined the Capgemini. So there I worked as a fresher. I joined as a fresher. Then as a fresher we know कि हम जिस भी कंपनी में जाते हैं तो वो कंपनी की एक फॉर्मेलिटीज होती है कि वो हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है. इट कैन बी इन फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, बैक एंड, और सम AI, सम एनी टेक्नोलॉजी, राइट, बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन देयर नीड, वो हमें ट्रेन करते हैं कोई एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में. सो एज अ फ्रेशर आई गॉट ट्रेनिंग देयर ऑन जावा, स्प्रिंग बूट एंड ऑन एंगुलर. एंड मेरा भी ड्रीम यही था कि एटलीस्ट मेरे जो स्टार्ट के 5 years थे, तो उन 5 सालों में मैं एटलीस्ट 2 कोई तो टेक्नोलॉजी सीख जाऊँ. So in first start 2 years, I learned the Android. I worked on that. Then luckily here in Capgemini, I learned the Java and Spring Boot, and I started continue working on the same. So again, after 1.5 years, suddenly the boom was come into the IT sector, and all the MNCs or the other companies were looking for a candidate, and they were also providing a better hike. So during that, I decided to go for a switch. Then I applied in multiple companies through Naukri, and I got a lot of calls. A lot of interviews were scheduled, and I was able to crack I was able to get at least 7-8 offers during that time. And I decided to go for Infosys. After 1.5 years, I switched and I selected the Infosys. The reason was behind it, I was having better offer than the Infosys. बट आई वॉज थिंकिंग सी, अगर अभी बूम है IT सेक्टर में और ये अगर सारी कंपनी हायर कर रही है, इन केस अगर जो एनवायरनमेंट है, कोविड अगर खत्म होता है, एनवायरनमेंट अगर स्टेबल हो जाता है, तो अगेन देयर विल बी ले ऑफ. सो आई वॉज लुकिंग फॉर सम सिक्योर अ जॉब, एंड दैट
that's the reason I went for Infosys. As we know, like they have some good policies as per the job security. And again there I continue working for 1.5 year. And after 1 year I was not getting any hike from there, and that was the reason behind it to switch again company. Okay, great, Gaurav. So since you have worked with Capgemini, Infosys, and then Infosys में आप already काम कर रहे थे, and then you have decided कि आपको hike नहीं मिल रहा decent amount का, and you have decided कि अब मुझे switch करना है. Since you have over 3 years of experience as a Java developer, so तब आपकी strategy क्या रही जब आपने decide कर लिया कि अब मुझे switch करना है, तो आपने कैसे apply करना start किया? Since जब आपने try किया, it was a recession time already, उस time पे hiring बहुत कम हो रही थी, तो आपने कैसे अप्लाई किया एंड हाउ यू क्रैक्ड योर फर्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी, तो ज़रा उसके बारे में थोड़ा बताइए. Okay, so like I will say like my experience I will share. So after 1 year मैंने 3 महीने खुद को प्रिपेयर किया for Java, Spring Boot, and if you are a backend developer then it's good to have some AWS or cloud or some other front-end knowledge also. Okay, so I started preparing for Java, Spring Boot and microservices, and मैंने पास में AWS पे भी काम किया था, तो उस पर भी मैंने कुछ प्रिपेयर कर लिया था. तो 3 महीने मैं कंटिन्यूसली प्रिपेयर कर रहा था. एंड आफ्टर 3 months, इन दिस 3 month आई वाज आल्सो ट्राइंग फॉर अपॉर्चुनिटी थ्रू नौकरी. So luckily, like in Infosys we have this 3 month notice period. So due to that reason, I was not able to get any call scheduled by any companies. But after 3 months, the Deloitte called me, and they were ready to wait for 3 months, no, hold for 3 months, and they scheduled an interview. And there were 3 rounds. First was the interview, second was the manager, and third was the normal HR round. So in Deloitte, in the first round, जो इंटरव्यू हुआ था उसमें उन्होंने मुझे सारा जो बेसिक से एडवांस जो कॉन्सेप्ट होते जावा के वो पूछे. देन दे वेर आस्किंग मी अबाउट द स्प्रिंग बोट. एंड सडनली जो इंटरव्यूअर था उन्होंने देखा कि मेरे रिज्यूम में मैंने एंड्रॉइड के एप्लीकेशन डाल के रखे हैं, मैंने कुछ फुल स्टैक के प्रोजेक्ट्स डाल के रखे हैं. तो उन्होंने मुझे पूछा कि ये खुद से बनाए हैं या ये कंपनी में. तो मैंने उनसे कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैंने जो खुद से बनाया है वो भी मैंने उनको वहाँ दिखाया, और जो मैंने कंपनी में काम किया है उसके बारे में भी डिटेल प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था. तो जो मैंने पर्सनल खुद के प्रोजेक्ट बनाए थे, ही वाज इम्प्रेस्ड बाय देम. ओके, एंड देन ही वाज हैप्पी विद दैट. एंड उन्होंने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं, just a normal question पूछे, and the first round like that cracked. In second round was the manager. It was a bit difficult as the manager were asking about the project, about your achievements, about the situational questions. So it was like it can differ from for person to person, but for me it was a bit difficult as every question was new for me, and I was not prepared for that. But see, based on your experience you can answer it. So I tried my best, and luckily I got cracked that second round. And third was like just for formalities, it was HR round. So after 3 months I tried Deloitte, and I got the offer from Deloitte. That was my first offer. सो गौरव, जैसे कि तुमने अपने 3 years के एक्सपीरियंस में ऑलरेडी 2 स्विच लिया है, लाइक व्हेन यू वर इन कैपजेमिनी यू टुक अ स्विच टू इन्फोसिस, एंड फ्रॉम इन्फोसिस यू टुक स्विच टू ईपैम सिस्टम. सो बेसिकली तो दैट मीन्स तुम्हें आइडिया है कि अगर 1 और 1+ years ऑफ एक्सपीरियंस है तो उनसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर कोई 3+ years एक्सपीरियंस है उससे किस टाइप के पूछे जाते हैं. सो बेसिकली डाउट क्या आता है जनरली स्टूडेंट्स का कि उनका 1 year एक्सपीरियंस है तो क्या उनसे माइक्रो सर्विसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या उनसे क्लाउड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या सिर्फ जावा और स्प्रिंग बूट के साइड ही वो अपने आप को प्रिपेयर करके चले. और लेट्स सपोज अगर उनका 3 years का एक्सपीरियंस है तो उनको माइक्रो सर्विसेज में या क्लाउड में कितनी प्रिपरेशन करनी चाहिए. तो आपने अपने एक्सपीरियंस से अगर आप शेयर कर सकते हो कि सिंस यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 1+, आपने ऑलरेडी स्विच किया था, 3 पे भी आपने स्विच किया है, तो आपका जैसा एक्सपीरियंस रहा कि वो किस टाइप से प्रिपरेशन कर सकते हैं. ओके, सो जब मैंने कैपजेमिनी से स्विच किया था, at that time was having 1.5 year experience, and previously I worked as an Android application developer for 1 year. So I showed that experience as well.
into the Infosys. The reason was during that in the 2020 end of 2022 the company was exist. Okay, so if the companies exist and even if you don't have the PF accounts and all the proof which MNC required for background verification, still you will be able to positively complete a background verification checks. Because the reason is nowadays like all the companies gives this background verification to third party companies who manually like physically visit the location if the companies are not big. Okay, तो अगर आप कहीं पे भी ऐसे कोई छोटी कंपनी का एक्सपेंस लेके जाते हो तो इफ यू हैव द सैलरी स्लिप देन इट इज गुड, इफ यू हैव पीएफ अकाउंट देन इट इज गुड, इफ द कंपनी एग्जिस्ट देन इट इज गुड. बट अगर कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मीन्स एग्जिस्ट करती थी बट नाउ इट इज क्लोज, सो अगर वो एक्सपीरियंस आप लेकर जाते हो एंड इफ यू डोंट हैव द पीएफ अकाउंट, ओके, then there are a very strong chances that the background verification will fail and you will be they will terminate your application, okay, in a starting 1 month only. So जब मैंने Capgemini से Infosys में गया था, during that the company was exist, so I shown 2.5 year experience. तो मेरा जो एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का वो काफ़ी अच्छा था. मैंने नियरली लाइक अराउंड 20-25 इंटरव्यूज फेस किए थे डिफरेंट कंपनी के एंड डिफरेंट साइज के कंपनीज के. ओके, तो जो छोटी कंपनियां थी जो मिड स्केल थी जो 500 to 1000 पीपल्स की थी, उनके जो इंटरव्यू मैंने फेस किए थे वो काफ़ी लाइक हाई लेवल के थे. दे वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी all the deep knowledge of Java, Spring Boot, even they were expecting me all the coding knowledge as well. If they give me some problem statement then I should be able to solve it. But compared to MNC it was like if I compare with MNC, then in MNC all the interviews were not as difficult as it was in the small companies. Okay, so जितने भी मैंने इंटरव्यू MNCs में फेस किए वो काफ़ी अच्छे लाइक आई कैन से नॉट इजी बट काइंड ऑफ मीडियम. So they were just asking about the Java, all the concepts of the Java, then the Spring Boot simple. And even if I don't have any experience on the, because I was not having during that any experience for the microservices, so I just say that I don't have any experience and they were okay with that also. Okay, so it's not mandatory that you should have hands-on experience, but at least you should know that what is the microservice and how like it is different from the monolithic architecture, then what are the components in it, like how you can create. So though you don't have hands-on experience on it, but you should be able to say at least the theoretical concepts of it. So अगर आपको इतना भी पता है then you will be able to easily crack the interviews after 2 or 2.5 years. पर जब आपका एक्सपीरियंस 3 या 3+ हो जाता है, at that time the peoples will expect the deep knowledge of all the things. You should be good into the coding and they will expect all the things. It's not like I don't know these things and they will be happy with that. They will expect at least something. Like for example in Spring Boot we have IOC, we have dependency injection, we have AOP concept. So if I say no, I'm not aware of IOC, so it is fine for 1 year, 2 year. But when you complete your 3 years experience, then you should know all the things about the Java, about the Spring Boot. They can ask you anything and you should be able to answer them. The reason is like even if you like not give 2-3 questions based on interviewer, it might get reject. Okay, so what I will suggest is at least based on your experience give some answer, some कुछ लिंक करके जैसे हम आंसर दे सकते हैं based on your experience. So they will be happy with that. At least you know something and like once you join the company you can say like I will learn this thing. So they will be happy with that. But you should have very good knowledge of all the things when you complete your 3 years experience. गौरव, तुमसे एक चीज़ कंफर्म करनी है, जैसे कि तुमने बोला कि अगर 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड होता है तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है कॉल आने में. एंड आई ट्रूली अग्री बिकॉज मुझे भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी बिकॉज 3 मंथ्स के नोटिस पीरियड पे आती है. तो जैसे कि तुमने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट किया होगा, नौकरी प्रोफाइल अपडेट किया होगा, 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड मेंशन किया, तो तुम्हें उस टाइम रिसेशन में कॉल्स आ रहे थे, मतलब कि हाउ यू गॉट द कॉल्स बेसिकली बिकॉज स्टूडेंट्स जनरली या एक्सपीरियंस प्रोफेशनल स्ट्रगल करते हैं
कि उनको कॉल ही नहीं आती अगर हम बात करें अगर हमारा नोटिस पीरियड 90 डेज का है तो। So see, it happened with me also and it happened with everyone कि अगर आपका 90 डेज का नोटिस पीरियड है then definitely जो नेक्स्ट कंपनी हमें हायर कर रही है they want immediate joiner or at least in 45 days you should be able to join, then only they will be show their interest and they will schedule an interview. Okay, so there are like very less chances, but the thing is most of the MNCs do the bulk hiring. Okay, now bulk hiring is what like they will hire like bunch of people like thousand of candidates because they also know these things के हम जब 100 कैंडिडेट हायर करते हैं then they it's not like कि 100 के 100 कैंडिडेट कंपनी हमारी ज्वाइन करेंगे. They will show some counter offers, they will show some they will go for some other companies as well based on their choices, based on their experience, based on if they are getting more good facilities into the other companies. So based on that the candidates will go into some other companies. Okay, so the HR or the companies also is aware of it. That's the reason they do the bulk hiring. Now in this what happened like we have the chance to get interview schedule for like these companies because if there are some small companies then definitely because I applied into those companies as well and I experienced that कि जो small companies होती है वो wait नहीं करती है, they want you to join within 10-15 days. Okay, so I would suggest here go for the MNC only, applied in a MNC only. If you have some friends, if you have some connection on LinkedIn, then ask them, give your resume, share your resume with them, ask them to refer you. So like this way you can get opportunity for interview into the MNCs. And see, if it is a time of recession and if you have like this 3-month notice period issues, then what I will suggest like there will be very less chances to get interview calls. So जो जितने भी आपको इंटरव्यू के कॉल आ रहे हैं like it's not like when there was a boom in the IT sector then like in a day the people were receiving like 5-10 calls, so there were lot of opportunities. Okay, but nowadays like now it is like 2024 and the month when I switched it was like June. During that it was not the same thing. There were lot of vacancies during that as well, but they were expecting 5+. They were preferring 5+ experience only. For 3+ there were a lot of like there were less opportunity, and also they were asking me to join as an immediate candidate, and that's the reason I was also not able to get the calls. But somehow like I received one call which was from MNC company only, and they were ready to hold for 3 months. So see, if the same thing is happening with you, it is the layoff time and you are not receiving the calls, so what I will suggest try to update your profile on Naukri. Okay, daily at one time, at least in the morning. Like what you can do, you can just go and update some basic details, your contact numbers or your notice period. Like if it is 90 then just change it to like 60 days, so that what happened like your profile will try to rank, because when the HR search at that time the candidates who is looking actively for the job, those profile will get ranked and they will only be able to get the calls. So what you can do, the other option is like what I used to do is कि जो मेरा resume होता था मैं delete करता था and again I was अपलोडिंग द सेम रिज्यूमे. सो मुझे जो व्यूज होते हैं इन नौकरी ऐप के, हमारे जो प्रोफाइल है वो कितने एचआर्स ने व्यूज की है उसका काउंट होता है. सो डे बाय डे दैट कॉल्स दैट व्यूज वाज गेटिंग इंक्रीज. सो आई वाज हैप्पी विद दैट. सो दिस इज द वन वे लाइक यू कैन ट्राई go into the market and try looking for the opportunity. So finally जब तुम स्विच का ट्राई कर रहे थे तो तुम्हारे पास कितने ऑफर्स आ गए थे, लाइक कौन कौन सी कंपनीज में तुम्हें ऑफर लेटर्स मिल गए थे, एंड एट द सेम टाइम वी फेस रिजेक्शन एज वेल, और तुमने रिजेक्शन भी फेस की होगी ऑब्वियसली. एंड फाइनली जब तुम्हारे पास ऑफर्स आ गए थे तो तुमने कैसे नेगोशिएट किया एंड हाउ यू डिसाइडेड कि तुम्हें EPAM कंपनी ही ज्वाइन करनी है? So see, my first offer was of Deloitte. Then in the 90 days notice period I was also not receiving any other
calls. Okay, so after like 30 days there were no call from any companies, and after 2 months also there were call, but they were not ready to wait for me for like next 60 days. Okay, so again I was also facing the same issue. Okay, call थे, but they were not able to hold the opening. Okay, so किसी तरह से मुझे लास्ट के जो 30 days थे उसमें एक एसेंचर कंपनी का कॉल है, and the interview was get scheduled, and that was the second company interview I gave in this during this notice period, and that also I was able to crack. And again there were some other calls, like from Accolade. I received a call, then some other MNCs, like I am not able to recall their name, but I received like nearly 2-3 calls from some other companies, some small companies, somewhere MNC, somewhere like up to 500 200 people, 1000 people's size company, like those calls I received. सो एट द एंड जब मेरा नोटिस पीरियड कंप्लीट होने में आया, एज आई सेड कि एन एक्वाइट हैज ट्राइड, बट सी इफ योर पैकेज इज हाई एंड योर एक्सपीरियंस इज लेस, then even if you are able to crack the interview, you will based on the budget, the HR will decide whether to give you more hike or not based on your current offer that you are holding right now. तो मैंने ऑलरेडी ऑफर्स होल्ड कर रखी थी एसेंचर की, जो काफ़ी लाइक मेरे करंट पैकेज पे इट वाज गिविंग मी अप टू लाइक 80% हाइक, एंड द अदर कंपनीज बजट वाज नॉट दैट मच दैट फेवरेबल. So even I was able to crack the interview, but I was not able to get the offer from them. In last week, like my notice period was going to end. In last week, I received a call from this EPAM, and फिर मुझे लास्ट वीक में EPAM की तरफ से HR का कॉल आता है, एंड एज आई वाज इमीडिएट जॉइनर, बस मेरा लास्ट एक ही वीक बचा था. सो दे शेड्यूल्ड इंटरव्यू, and there were also like they were having 3 rounds. 2 were technical and 1 was the manager last round. So like these 3 round they were taking, and luckily I was able to crack all those 3 rounds, and then I received a offer from EPAM too. It was like up to 100% hike they were providing me. Again, as I was ending up with my notice period, so my joining date for the previous offers were near. तो मुझे डिलॉइट एसेंचर की तरफ से भी कॉल आते हैं कि लाइक जस्ट कंफर्म कि I will be joining or not. So during that I cleared them like I'll not be able to join because I'm holding the more better offer, and then they were trying to negotiate with me. They were trying to increase their offer, but still they were ready to give at least up to like a 90% hike. It was less than the EPAM offer, then I preferred the EPAM. The second reason, जो डिलॉइट और एसेंचर की ऑफर थी, they were calling me from first day in hybrid mode, whereas in EPAM they were giving some flexibility that you can do work from home until you get a project assigned to some project. I was getting in EPAM the remote opportunity, and I was looking for the same, so that's the reason I selected the EPAM here. So that was the reason behind why I chose the EPAM and how I like negotiate with other companies. एंड गौरव, आई वुड से कि मुझे ना अभी रिसेंटली ही मेरे को एक DM आया था जिसका ऑलमोस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड ही गॉट सिलेक्टेड इनटू EPAM, एंड ऑन द सेम हैंड उसका जो सिलेक्शन है वो डिलॉइट में भी हो गया. EPAM इज़ ऑफरिंग बेटर पैकेज एंड इवन द रिमोट अपॉर्चुनिटी. बट होता क्या है, EPAM जो कंपनी है उसका ज़्यादातर किसी ने नाम नहीं सुना होता. व्हेन इट कम्स टू डिलॉइट इज़ बिग 4, सो सब लोग जानते हैं डिलॉइट का नाम. तो ये कन्फ्यूज़न रहती है. ऑल्दो EPAM इज़ प्रोवाइडिंग बेटर पैकेज, एंड इवन दो समटाइम्स अगर क्लाइंट जो है वो रिमोट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दे तो आपको रिमोट भी मिल जाता है. बट डिलॉइट इज़ अ बिग 4, सो वो काफ़ी कन्फ्यूज़ था कि डिलॉइट चूज़ करूँ या EPAM चूज़ करूँ. तो आपने इतना टफ डिसीजन उस टाइम कैसे लिया? तो आपको क्या लगता है मतलब कि दोनों में से क्या चूज़ करना चाहिए अगर आपके पास 2 ऑफर है एट द सेम टाइम, इवन दो आप इंक्लूड कर लो कि एसेंचर का भी ऑफर है? तो okay, so see, for me, I connected with people who were working in Deloitte, in Accenture also, and I
asked them to share their experience. So based on their experience, they said few people suggested that they are still working from home, and few people suggested that they are working 5 days in a week from office, and there is a huge work pressure in before companies. So that was one reason for me to not go for Deloitte. The second reason was like in compensation wise, also EPAM was offering more compared to Deloitte. But here the things comes, the Deloitte is like even like for me also, the EPAM, when I tried applied get the offer, it was new for me. I also never heard the EPAM name, because see, Deloitte, Accenture, these are well known MNCs. Even in when we are in college, during that also we get this company's campus also. So we from there also, from that time only, we are aware of these names. But the EPAM was new for me as well. That was my preference to choose or to go for EPAM. And the reason here again is like, see, in Deloitte, in Accenture, there are chances to get the same technology, but there are again chances, if they don't have the relevant technologies projects, they can put you into some support kind of work. Okay, so in EPAM, I believe कि जो आपको experience है, based on your relevant technology, you will get assigned a projects. Okay, it's not like if you are Java backend developer, then you will go and work for some support kind of projects. They have some मैंने एक और चीज नोटिस की है कि जो MNCs जैसे कि डिलॉयट, एसेंचर या और भी जो बड़ी MNCs है जो वेल नोन है, कि उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं. जैसे आप आज उस प्रोजेक्ट में अगर सिलेक्ट हो जाते हो, सो लाइक नेक्स्ट 2-3 years you don't need to worry until and unless you are your work is good there, like the leads or the managers will not let you go out from the project. Okay, but in case of EPAM, I say कि यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स है जो काफी देर तक लॉन्ग टर्म से चले आ रहे हैं, एंड दे आर फॉर लॉन्ग टर्म. बट काफी प्रोजेक्ट्स है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए, लाइक 6 months, 1 year, 1.5 year, like that. So when you are willing to go for EPAM, like I was also willing, and I know from like the person who referred me into the EPAM, and the other EPAM employees I connected through LinkedIn, I asked their experience. So I was aware of it कि जब भी हम EPAM में जाते हैं किसी प्रोजेक्ट पे हम असाइन होते हैं, so it's not like कि हम डायरेक्टली असाइन होते हैं. There will be a project rounds, but it's not like at same level like in MNCs. There will be some like medium level, we can say medium level interview will happen, but in EPAM it's not the case. The interview will be very tough, and if you are having like a very good technical skill, and you think like you can easily like crack the interviews, then you can join the EPAM. गौरव, आई वुड अग्री सेम. मेरे को भी डिफ़िकल्टी फेस हो रही थी. यू वुड से कि मुझे भी डर था कि जो टेक्निकल राउंड्स हैं, मैंने भी सुना था कि काफ़ी टफ होता है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू इन्फोसिस कई बार हम डायरेक्ट मैप हो रहे होते हैं. व्हेन इट कम्स टू एसेंचर, तो प्रोजेक्ट के जो राउंड होते हैं, जस्ट कई बार होता है कि जो इंटरव्यूअर हैं वो जनरल टॉक कर लेते हैं, क्लाइंट जनरल टॉक कर लेते हैं, या 1 hour का इंटरव्यू हार्ड टू हार्ड हो जाता है. बट EPAM में इज जस्ट लाइक अगर आप आउटसाइड इंटरव्यू दे रहे हो, जैसा ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ क्लाइंट इंटरव्यू रहेगा. लाइक अगर आपने EPAM के एक्सटर्नल इंटरव्यूज़ निकाल लिए हैं एंड यू आर प्रिपेयर्ड वेल, तो सेम लेवल पे आप क्लाइंट इंटरव्यूज़ भी फेस करके निकाल सकते हो. तो आपकी सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन ही रहनी चाहिए टिल द टाइम यू गेट अलोकेटेड इनटू द प्रोजेक्ट, आई वुड से. सो बेसिकली गौरव ज्वाइन करने से पहले उन्होंने मेरे से पूछा था कि EPAM ज्वाइन करूँ या ना करूँ, तो मैंने उनको सारे प्रॉस कॉन सब बता दिए थे कि कंपनी को ज्वाइन करने के क्या है. हाँ, ये है कि थोड़ा देखो, एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या प्रोजेक्ट मिलेगा ये तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता है. बट येस, इतना है कि रेलेवेंट टेक्नोलॉजी जिस पे आपने ज्वाइन किया उसमें ही मैप करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे विल स्केड्यूल योर इंटरव्यूज विद द क्लाइंट ऑन दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी. बट येस, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कैसा काम रहेगा वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, बिकॉज हो सकता है कि वो जिस प्रोजेक्ट में आपने ज्वाइन किया वो इनिशियल फेज में है तो आपको कोर डेवलपमेंट वर्क मिल जाएगा. बट लेट्स सपोज कि अगर आपने उसको एंड फेज में ज्वाइन किया, जब आपका प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट हो गया, बिग बग फिक्स के काम आ रहे हैं, या उतना कोर डेवलपमेंट नहीं हो रहा, डिप्लॉयमेंट साइड वर्क जा रहा है, तो ये टोटली डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के फेज में. तो उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है. सो अगर आपके पास, आप देखो कि आपके पास ऑफर ज़्यादा कौन सी कंपनी दे रही है और आपके नॉलेज और स्किल कहाँ पे लाई करता है, उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लिया जा सकता है. येस,
सो गौरव, बेसिकली हमने अभी काफ़ी डिस्कशन कर ली है. अभी आई टच अपॉन, यू हैव वर्क विद Capgemini, you have worked with Infosys. So how was your experience with both the company? If there is a fresher who is starting his or her career as a developer, so which company he or she should choose, like Infosys or Capgemini? Okay, so for me, see, in Capgemini, when I joined as a fresher, there were a third party team who was providing a training to us. Okay, I am not aware about the Infosys, but as per my experience, I know like in all the MNCs it happens when we go as a fresher. तो जिस भी कंपनी में हम जाते हैं वो हमें एटलीस्ट 2-3 मंथ्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. एंड आफ्टर दैट जैसे कि नॉर्मल प्रोसेस होती है कि वी गेट इनटू द बेंच एंड हमें फिर अलाइन किया जाता है किसी प्रोजेक्ट पर. एंड अगर हम लाइक 1-2 इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाते हैं, so we can they can put to us in any projects. Okay, so in some of the situation ये होता है कि जैसे अगर हम 1-2 इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाते एंड दे आर हैविंग the urgent need in some of the projects and they want some fresh candidate, so वहाँ possibility होती है कि आप assign हो जाओ without any interview as well into some projects. But with me it not happen. For me, based on training, the interviews happen into the Capgemini, and there based on interview I selected. But if I shared you about the Infosys experience, then there I apply. They provided me some opportunity for the company for the projects, and I was not able to crack it. They just gave me one chance, and I was not able to crack it. And they were having some urgent requirement in some other projects, so they directly without any interview they completed the process for that project and they assigned me that project. So it happens based on the need of the company and based on your experience, your technical skills. If it is matching to any specific project, they have any urgent requirement, you will directly get into it without any interviews. ओके, ग्रेट. सो गौरव, एक्चुअली आई फॉरगॉट टू आस्क, बेसिकली आपने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वो किस पैकेज पे स्टार्ट की थी, एंड राइट नाउ ओवर 3 years ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव लैंडेड अप टू सम सर्टेन पैकेज, तो वो आपका क्या पैकेज है? लेट्स सपोज कोई फ्रेशर जो है वो जावा डेवलपर की जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो वो कितना पैकेज एक्सपेक्ट कर सकता है मार्केट में, एंड इवन दो आफ्टर 1, 2 और 3 years ऑफ एक्सपीरियंस वो कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब वो स्विच कर रहा होगा? सो आप थोड़ा शेयर कर सकते हो तो बता दो. Usually for fresher, if you are going through some off-campus drive, it will be up to like 3 to 4 or max to max 5, 6. Okay, not more than that. But there are some companies like Persistence who give for fresher up to like 7.5 LPA. Okay, so it differ from company to company also, but for most of the candidate it happens for fresher it is around 3 to 4, in between that only. And with me also it was same. And after 1.5 year when I switched, so as the market was good, so I was able to get up to 190% hike. And again, like after joining the Infosys, I again switched after 1.5 year, but the market was not good as it was good during the 2022. So that layoff is also like still it's happening in 2024 and the market is not good. So here during this time the companies were not ready to give a high package. They were just giving like 30-40% hike plus but as I was having some holding offers in my hand, so I was ready to counter to the companies, and I was able to get up to 100% hike after like 3 years. आई टोटली अग्री. मतलब रिसेशन के टाइम पे जो कंपनीज़ हैं वो उतना ज़्यादा हाई पैकेज नहीं प्रोवाइड करी जितना वो कोविड के टाइम पे प्रोवाइड कर रही थी. बट येस, यू हैव ऑलरेडी गॉट सो मैनी ऑफर्स, और इतने सारे ऑफर्स को लेते हुए यू नेगोशिएटेड विद द कंपनी एंड यू गॉट 100% हाइक, एंड दैट्स रियली रियली वेरी नाइस, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट गौरव. और ऑलमोस्ट हमने सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर अप कर लिए हैं इस वीडियो में. वी आर थिंकिंग ऑफ कि जैसे गौरव ने डिलॉयट कंपनी का ऑफर क्रैक किया एंड ही गॉट एसेंचर ऑफर and he got EPAM offer as well and Accolade Digital as well. So we will be shooting some of the videos जिसमें हम उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानेंगे, be it with Accolade company, Accenture or the EPAM one, and we will be making some more video with Gaurav.
पॉसिबली एंड आई थिंक ये वीडियो जो है वो अच्छी जाएगी बिकॉज गौरव ने जो भी कंटेंट जो है वो अपना शेयर किया है व्यूअर्स के साथ, दैट्स बीइंग गोइंग टू बी वेरी वैल्यूएबल एंड दैट विल बी गोइंग टू ऐड वैल्यू टू द ऑडियंस एज वेल. सो इट वाज नाइस टू हैव यू ऑन माय चैनल एंड आई बिलीव इस वीडियो के बाद अब हम दोबारा कनेक्ट करने वाले हैं एंड वी विल बी शूटिंग सम अनदर वीडियो ऑन योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस with other companies, and I'll be sharing Gaurav LinkedIn ID, and the one who wants any kind of information related to Java development or switch se related, be it anything, so you can directly connect to Gaurav and you can comment or ping whatever you have any kind of doubt. So yeah, thank you so much Gaurav for connecting me. Thank you so much once again Kajal for inviting me, and क्या बोलूँ और अच्छा कुछ बोलना पड़ेगा ना इनमें. बोलो, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी बोल सकते हो. And you are doing really good work for as the so much. I'm really doing good work. It's just like जब कलीग्स एक दूसरे को प्रेज करते हैं तो बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता है. येस, आई एम डूइंग वेरी ग्रेट वर्क और तुम मेरे चैनल पर आए हो एंड यू हैव शेयर्ड योर वैल्यूएबल कंटेंट एंड दैट इज इटसेल्फ अ ग्रेट जॉब यू डिड. सो और कुछ बोलो थोड़ा और तारीफ में कुछ. As like for like nowadays like all the people need some guidance when they look for some other opportunity, so you are giving them kind of बस ठीक है, बस हो गया. यस, आई एम डूइंग ग्रेट. अरे मैं इसको डाल दूंगी, पता तुमको, मुझे इतनी हंसी आ रही है, तुम इतने ऐसे बोल रहे हो, ये थोड़ा फनी सा हो जाएगा. I'll surely add it. हाँ, बहुत तारीफ कर दी है गौरव ने मेरी. सो येस, इट वॉज वेरी नाइस टू हियर ऑल दोज लवली वर्ड्स फ्रॉम यू गौरव. सो बेसिकली हम दोनों तो अभी EPAM में एंड वी आर करंटली वर्किंग विद EPAM. सो लास्ट हम सेम प्रोजेक्ट में थे बट नाउ वी आर नॉट इन द सेम प्रोजेक्ट, बट येस, सो एक ही कंपनी में है, सो इट हैपन्स. सो बेसिकली इट वॉज नाइस हैविंग यू गौरव ऑन माई चैनल. सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग. थैंक यू. thank you. थैंक यू.